Prabhuji, visible and audible. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm so happy. All of you. Also, I can see, then it will be so nice. All of you can turn on your video. I'll be very grateful. Some are trying to do that. Okay, let us begin with prayers. Om Ajnanatirmirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinatarinam Shri Paramananda Madhavam Shri Chaitanya. Hare Krishna. So, आप सभी का भगवत गीता advance I think has been finished by Shintai Prabhu. Am I audible na clearly? Yes, Prabhu. Okay. So Bhagavad Gita advance has been finished, I suppose, by Shintai Prabhu all the sessions. And now actually Prabhuji wanted, because you have done the basics course also, most of you have done the advanced course. So we wanted to do like a complete revision session. Actually, Shintai Prabhu has prepared a 108 questionnaire. Have you ever seen that? Any one of you? The 108 questions from the Bhagavad Gita. So it covers all the basic concepts of Bhagavad Gita in the form of questions. So Prabhuji wanted me to discuss that with all of you. So over the next 2 or 3 weeks, maybe next week and next to next week, we will be discussing these question answers so that it's a complete brush up of the Bhagavad Gita. And why it is in the question form? Because Bhagavad Gita is a book of question answers, correct? Arjuna is asking different questions, Krishna is answering. So how entire Bhagavad Gita can be put in a question format of different concepts? Prabhuji has done a lot of hard work in that. And it's very interesting because it will hit in different sessions what Prabhuji has discussed with you. It will be brush up, and especially the questions which day-to-day life people come up with. अगर you tell someone, if आप किसी को बोलेंगे कि मैंने भगवद गीता पढ़ाई किया है, I've done a Bhagavad Gita, then obviously people will ask you question, what is the purpose of human life, now how to control anger, like there's so many questions are there. So उस तरह के जो most important is, and then actually we can answer unlimited questions with Bhagavad Gita. Okay, so I mean so many questions, but the main concepts that are generally are supposed to be known by a student of Bhagavad Gita is very important, because after reading Bhagavad Gita, if we cannot tell answers to some questions from Bhagavad Gita, then what is the use? So it will be like revision also, and we will also tell you from which verses these answers can be given in the Bhagavad Gita. Okay, so let us begin. I will share the screen, the questions, and okay, we'll give you, because this is first time, so we will give you some homework also from next time so that you can prepare and come. This time we will discuss few questions. From next time onwards, just one second. Yeah. So next time onwards, you can do this and come so that it will be more nice. You can answer more nicely. So I'll just open it. Yes. So I'll share my screen. Please tell if it is visible. Is it visible? Yes, Prabhuji, it's visible. Okay, so these are the questions, and some words, number, and references it can be given, because generally if you give some answer, then people will say, "आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ पे ऐसा भगवान ने बोला है?"
अब अपने मन से तो नहीं बोल रहे हैं. So we will also be seeing the verses where these things are being spoken. And if you know, one by one we will discuss. And I will, as the question we progress, you can try to answer, and then we will discuss the standard answer. Okay. So first question: what is the purpose and value of human form of life as distinct from animals? Everyone is able to see? Say yes or no. Yes, Rohit. Yeah. So what is the purpose and value of human form of life as different from animals? What is the answer to this? So the Hare, four basic things. Yes, yes. Please. Hare Krishna, Prabhu. Yes, yes. Please go ahead. Prabhu, to difference between matter and spirit, and to difference between what is right and wrong means a human has given the authority to choose what is right and what is wrong, but animals don't have that thought that to choose that which is right and which is wrong. Okay, very good. So human has discrimination power, correct? But what is the purpose of human life? Is the purpose of human life just to how to discriminate good and bad? What is the purpose? You are Prabhu, telling special feature. This is a special feature. Human being can distinguish between good and bad, right and wrong. That is a feature, but I am asking purpose and value. Prabhu, to go back to Godhead is the purpose of human life. Okay. Yes, we are quite close. But something, have you heard a verse which clearly states about this? Humans and animals. What is that verse? Anyone knows? One word, dharmo vihina pasubhi samana. The four basic. Ah, I don't remember the ahara word. nidra bhayamaithunam cha. I took a class and I told this, na? Yes, yes, Prabhu. Ahara nidra bhayamaithunam cha. Eating, sleeping, mating, and defending is the purpose and value of animal life. Eating, sleeping, mating, defending, यही करना animals को आता है. बट ह्यूमन बीइंग कैसा लगे? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो. He can do dharma. And what is dharma? Who will tell? What is the meaning of the word dharma? People will ask ना. आप बोल रहे हैं ह्यूमन फॉर्म का जो वैल्यू और पर्पस है धर्म करना है. Prabhu, What act is as per dharma? the scripture. Dharma is Yes, yes. Hare Krishna, Some Prabhu. Mataji, some sound came. Hare Krishna. You have to speak on the mic little loud. Hare Krishna, Hello. Prabhu. You are very Hare Krishna. feeble. Your sound is very feeble. Can you speak on the mic little loudly? I am trying, Prabhu. Okay, please speak. Hello. Yes, yes. Go Hare ahead. Krishna. Actually, Dharma is to love and serve for God. Okay. Hello. Yes, yes. Love God and serve for God. That is the dharma. purpose. That is parodharma. That is the highest form of dharma. That is the highest form Yes. of dharma. But what is the meaning of the word dharma? Following I the am not telling. prescribed duties mentioned in Vedic literature. Yes, the laws of God which are prescribed for us are called as dharma. Like there is putra dharma. Like what are the duties of a son? Similarly, there is Rashtriya dharma. What are our responsibilities towards our state, towards our country? Everybody, we have different kinds of dharma, right? Similarly, if somebody is a student, he has a dharma. But the ultimate dharma, which is called paro dharma, is to love and serve God. So dharma means the laws of God which are prescribed for human beings. Is it clear, everyone, with this answer? And how it is distinguished from animals? Because animals do not have any dharma. Animals do eating, sleeping, mating, and defending. And we are separate from that because we can perform dharma. Is it clear? And the purpose of human life is
to execute dharma, to understand the difference between matter and spirit. Okay. So next. So Prabhu, I can you hope repeat the verse number once? Wait, what was the word? the verse is from Mahabharata. I don't know the meaning, the number of the verse. This Okay, verse Prabhu. comes in the and also in the Hitopadesh. In these two, this verse comes. And we can also write this Athato Brahma Jigyasa. This is what is the purpose of human form of life? Vedanta Sutra says Athato Brahma Jigyasa. Now you inquire about absolute truth, the difference between matter and spirit. That Jigyasa can be done only in the human form of life. Is it clear? Okay. Next question. What is the purpose of Bhagavad Gita? भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? सिंपल फॉर्म में. देयर आर मेनी यूजेस. आई एम नॉट आस्किंग यूजेस. उससे फायदा क्या होगा ये नहीं बोल रहे. उसका पर्पस क्या है भगवत गीता का? What I feel is that God had said in Kali Yuga, people will not be able to remember things and they will not read all the Vedas and they will not have the intellectual capacity to understand the Vedas and our religious scriptures. So this book, Bhagavad Gita, is a compilation of all the knowledge. And if somebody reads Bhagavad Gita, he actually gets the essence of all the scriptures that we have had. So what I feel is that God, before Kali Yuga started, gave these, he verbally told that this is what we need to do to go back to Him. Okay. That's what I feel is the purpose of Bhagavad Gita. Through Him, we have actually got to know what needs to be done in this world to go back to Him. Okay. So is it only to go back to him? Is Bhagavad Gita only telling of how to go back to him? No, it is also telling us how to lead our life fruitfully and to understand Him. Yeah, and perfect. to understand the purpose of life. Yes. So Bhagavad Gita is the manual of life, of this life and life beyond. How do you live this life purposefully, okay, meaningfully? So it helps us, we can say the purpose of Bhagavad Gita is to align our life according to the instructions of the Supreme Controller. It's like a manual. मैनुअल क्यों होता है बताइए? कोई भी चीज का मैनुअल क्यों होता है? ताकि हम उस चीज को सही से ऑपरेट कर पाए. करेक्ट? Similarly, we are given this human life, then there should be manual how to utilize this human form of life. Obviously, we have to go back to Godhead, we have to go back to Krishna, but even we have to live in this world. So the purpose of Bhagavad Gita is to give us knowledge of aligning ourselves properly to live according to the laws of God. Does it make sense? And where in Bhagavad Gita this thing is spoken? You will see that in the conclusion of Bhagavad Gita, Arjuna says, Krishna says, Yathechasi tatha kuru. Now I have given you knowledge. You do whatever you like. And what Arjuna replies, did he say, yes, I will do whatever I like? No. He says, Karishye vachanam tava. He said, Nashta moho smritir labdhva. All my illusion is dispelled. I have got perfect knowledge and Karishye vachanam tava. I will do as you have instructed. So Arjuna, as a perfect student, is teaching us that the purpose of Bhagavad Gita is to understand how to align ourselves with the laws of God and to execute them. Is it clear? So Bhagavad Gita chapter number 18, text number 73, Arjuna says that I will do what you have said and apply it in my life. Okay. बहुत लोग को लगता है भगवत गीता पर्पस क्या है? सिर्फ पूजा करना है, भगवत गीता को प्रणाम करना है, भगवत गीता को सुंदर से लाल कपड़े में बांध के ना, रेड क्लॉथ, आई हैव टू बाइंड इट एंड कीप इट इन माय होम, डू पूजा ऑफ दैट इज वेरी गुड, यू कैन डू दैट, बट दैट इज नॉट द पर्पस. करिष्ये वचनम तव. Whatever you have spoken, my dear Lord, I will do and act accordingly. That means Bhagavad Gita is a book of application, a manual of how we should lead our life.
Okay. Now, third, what are the three broad categories of knowledge mentioned in the Bhagavad Gita or Vedic scriptures? Entire Vedic scriptures speak about three broad categories. What are those three aspects of knowledge that is spoken? Hare Krishna Prabhu, can I? Yeah, sure. Go ahead. Prabhu, Sambandha means to have the knowledge, matlab, to have to know the knowledge between Lord and soul. Then Yeah. Abhidya means to regulate those activities, means ki, um, doing worshipping to God, and so that uh, we can revive our relationship with the Lord. And then the third Prabhuji said, um, yes, What is that? Prayojana, that means Prayojana, that means ki, to know the ultimate goal of our life with the Lord, means our conditioned soul. Yes, very good. Loud Hari Bol for Tirtha Mataji. So that is correct. So these are the three things. I will give you an example. जैसे कुछ भी हमको काम करना है, फॉर एग्जाम्पल खाना बनाना है, तो उसका क्या क्या वो है, पहले हमको क्या चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि किस किस चीज से खाना बनेगा, समझ आ रहा है ना, क्या बनाना है, कुकिंग कैसे होता है, Ingredient. क्या होता है. Yes, so we need to know, we need to have vegetables, we need this, the whole thing, we need the ingredients, we need the knowledge of cooking, basic understanding कि cooking है क्या. Correct. And second thing is abhidaya, means the process. First is relationship, second is the process. Process means we need some vessels, we need fire, we need how to cook, we need to know when to put salt, and the prayojan is ultimate dish that is prepared. Correct. So similarly, all the knowledge in the scriptures basically speak about three things. Sambandha, that is the relationship between the soul and super soul or God. क्या रिश्ता है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हमारा आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में बताते हैं. सेकेंड इज abhideya, the process. Okay, if I am servant of Krishna, if I am a soul, then what is the process of reviving my relationship with God? So there are so many do's and don'ts. Chant Hare Krishna, get up in the morning, they sing the Mangalarti, you attend Bhagavad Gita, read Bhagavad Gita, you don't eat non-vegetarian food, you don't take alcohol. So many do's and don'ts are there. Correct? Don't criticize others, like that. And the last thing is what I will get after doing this process is the prayojan or the ultimate goal. And the goal is love of God. That we will develop love for Krishna, relationship with eternal relationship of a servant and master with Krishna, which is eternal, which will never end. Very good. So in the Chaitanya Charitamrita, there is a verse which tells about this. So verse goes, Veda Shastra kahe Sambandha Abhideya Prayojan. So there Lord Chaitanya tells that the scriptures are telling about these three things. It comes in the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter number 20, verse number 124, where it is says that this is the discussion of all the Veda Shastra, Sambandha Abhideya Prayojan. Very good. Is it clear for everyone? Others can also participate. Okay. Think where you have heard this, where in the Bhagavad Gita or where in the class you heard this. Okay. Fourth, is Bhagavad Gita a mythological discussion? Mythological मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? Mythological comes from the word myth. Myth मतलब काल्पनिक. समझ आ रहा है ना, ये घटना काल्पनिक है. ऐसा कोई मिथ है क्या? इज इट अ माइथोलॉजिकल डिस्कशन कि हाँ ऐसे स्टोरी बनाया है किसी ने कि ऐसे एक बार तो डिस्कशन हुआ था? इज इट अ माइथोलॉजिकल डिस्कशन और रियल डिस्कशन? It is a real discussion ओके. because there are proofs that Mahabharata
the war of Mahabharata, the war took place. And since Bhagavad Gita has been the way it is, it was spoken 5,000 years, and there have been no changes at all. That itself proves that it is not mythology, it is the truth. It is historical. Obviously, it is old, but it is not myth. So it is historical conversation in the Mahabharata. The Mahabharata, one section of it is the discussion between Krishna and Arjuna, which is told by who is telling whom? Krishna is telling Arjuna, and it is noted by Sanjaya. Sanjaya is Sanjay. telling to Dhritarashtra, correct? And how Sanjay is able to see? How Sanjay is able to see? He was Because given the powers. he was given special powers, like a satellite communication, blessing by Vyasdev. So he was a disciple of Vyasdev. So Vyasdev had given him special blessing that he can see what is happening anywhere in the world. So he narrated the whole thing to Dhritarashtra. Okay, so it's not a myth. Just like Mahabharata is not a myth, there are so many proofs. So Bhagavad Gita is a discussion in between. It's a part of the Mahabharata. Okay. Okay. Let's go next. In the Bhagavad Gita 18th chapter, text number 74, 75 also, this word comes, Sakshat Kathyata Swayam. Sakshat means, Sakshat matlab kya hota hai? Amne samne. Krishna is himself, Sanjay speaks. The Sakshat Krishna has spoken this knowledge to Arjuna. So he tells to Dhritarashtra like that. Okay. Okay. Are Vedic scriptures scientific or simply superstition? How to prove them scientific? वैदिक स्क्रिप्चर्स वैज्ञानिक रूप से उनका नींव है, दे आर साइंटिफिकली बेस्ड, और देर आर सिंपली काल्पनिक, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास? Prabhuji, Vedic scriptures are scientific because we have seen that many knowledge are already available in the scriptures, like how to make airplanes, how how the baby is inside the mother's womb. All these are already provided in Bhagavatam and other scriptures. Yes, embryology is given in detail in the Srimad Bhagavatam. How the fetus develops from first day till 9 months, that is given. That means it's scientific. That time there was no medical science. How they came to know what is happening inside the mother's stomach? Yes. Any other examples how Vedic scriptures are scientific? Past life experiences that tells us about we are Atma and we are not just this body. So like scientists have proven already that there is past life. Yeah. So Vedic near-death scriptures speak about reincarnation, and now scientists are able to prove it. Vedic scriptures already know this. They're scientific. Yes. Anything else? In many times we learn about Mitra, Nakshatra, everything, and it is already mentioned in our Purans and Veds. जो भी हमारे महर्षि हुए वो अपने नग्न आंखों से देख लेते थे कि कौन सा ग्रह कैसे नक्षत्र में पड़ते, तो ये सब इट्स नॉट ए इट्स बेसिकली रियल. तो इतना सारा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन हैज बीन ऑलरेडी गिवन इन वैदिक स्क्रिप्चर. रादर फ्यूचर का भी क्या हुआ है कि किस दिन कौन सा नक्षत्र होगा, कैसे होगा, So they were expert in astrology and space physics also. So similarly, we see so much Ayurveda knowledge is given. They had no microscope. They had no disease measuring stethoscope, blood pressure measuring machine, but they are giving such nice detailed explanation about so many diseases. Similarly, there is Vedic mathematics. The example of Shukrit, we can say. Yes. Similarly, we have Vedic mathematics with such a fast, speed calculation methods. So like this, we can see that Vedas have all types of knowledge, much of which is very, very scientific, but it does not need research because Vedas are words of God. God does not need to do some research to give knowledge. He knows everything and he has given it in the form of scriptures. Now, I will give you some special example. Like how many of you know that scriptures tell that the stool of any animal, any living entity is contaminating. Stool samajhte hain na? Excreta.
waste product. So the stool of any animal is contaminating except cow. It is given except cow. Rather, it is said that the cow's stool is very purifying. Now, how scriptures came to know? Now, scientists are able to. Wow, there is a special pathy called as cowpathy. You know that, like allopathy, homeopathy, naturopathy. Now there is a special pathy which there is a cowpathy, means treatment with all cow products, with cow urine and gomutra, with milk, ghee, curd. You can cure so many diseases. So scientists को तो वो अभी research करके मिल रहा है. But that time only scriptures had tell that other than cow, all the excreta of all animals is contaminated. Similarly, the scriptures tell that the bones of any living entity is contaminated. जैसे अगर आप किसी का हड्डी छूते हैं तो आप contaminate हो जाते हैं. You become impure, except one. कोई बता सकता है कौन सा जानवर का हड्डी छूने से शुद्ध हो जाता है? शंख शंख बजाते हैं, देखा आपने? Now scientists are finding that the vibration that comes out of the conch shell are very purifying and very peace giving to the mind. It generates high frequency waves which are very good for human ears. So how Vedic scriptures came to know all this? So like that, there are many things given as knowledge without any theorem or whether any proof, but they are coming out to be true. That means they are scientific. Okay. Next, sixth question is very, very important. Who can understand Bhagavad Gita properly? कौन है जो भगवत गीता को सही से समझ सकता है? A person who surrenders to Lord completely. Okay. There is specific verse where Krishna says this. Two things. Yeah, this is obviously because Krishna says, "Sistyasteham Shadhi Mam Tvam Prapannam." आपको याद है? ये first time Krishna speaks. जब अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपका शिष्य बनता हूं, अब आप मेरे को समझाइए. वहां कृष्ण गीता का ज्ञान देना चालू करते हैं. That means first thing is that one has to surrender to Krishna. That yes, I want to follow, I want to understand what you are telling, and I want to follow it. Then that person is qualified to understand Bhagavad Gita. कोई अगर challenging mood में आना चाहता है, चैलेंजिंग, क्वेश्चनिंग, आर्गुमेंटेटिव, दिखा दूंगा मैं भी, अरे क्या आता है बताने दो, मेरे को भी बहुत नॉलेज है, such kind of person cannot understand Bhagavad Gita. One has to be humble and submissive. Submissive समझते हैं ना कि I want to learn and also follow, not that कि मैं खाली जानना चाहता हूँ, कुछ knowledge gain करना चाहता हूँ, and then we are argumentative, then we will not understand. And what is another qualification? Krishna says in the Bhagavad Gita, कौन भगवद गीता समझ सकता है? Very important verse. So this is the first one, that is one needs to surrender is Bhagavad Gita, chapter number 4, text number chapter number 2, text number 7. Next. Now Krishna says devotee can understand Krishna. Devotee can understand. Hari bol. So Bhakto'smi में सखा चेती, Krishna says, मैं तुमको ये ज्ञान क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो. You are my devotee, and therefore I am revealing this knowledge to you. So very important is to become a devotee of Krishna. He can understand this spiritual knowledge. And one more qualification Krishna says in chapter number 9, text number 1 is pravakshami anusuyave. Anusuyave means non-envious. जिसको दूसरे से ईर्षा नहीं होती है, वो भगवत गीता समझ सकता है. जिसको दूसरे से जलन होती, ईर्षा होती है, एनवी होता है, समझ रहे हैं? यू अंडरस्टैंड एनवी? यू हैव इसको मत्सर बोलते हैं हिंदी में, ओके, और वी कैन ऑल्सो से जेलसी. सो दैट्स टाइप ऑफ पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड द भगवत गीता. ओके, but most important qualification is to have surrender to Krishna and to be a devotee of Krishna. इसीलिए if we use our intellect,
just to understand the knowledge of Bhagavad Gita, we can't understand. We have to surrender, we have to serve Krishna. Then we can understand. Okay, next. Can anyone become a teacher of Bhagavad Gita? If yes, what he needs to do? क्या कोई भी भगवत गीता पढ़ा सकता है दूसरे को? Only Srinitha Prabhu can become teacher. Or what do you need to become a teacher? Prabhuji, you are also PhD? teaching, I believe. Huh? You are also teaching, I believe. I think. So, I believe that is the same. The last question is related with this particular question also. So this question is very important, because if you tell nobody, everybody cannot become teacher of Bhagavad Gita, then I have to end this class here only, because I can also not become a teacher of Bhagavad Gita. I If you believe, want to, Prabhuji, the last question you have asked, that the answer is just lying beneath that particular that particular question only. That means the Isya, the devotee, or who just I think these two questions are interrelated, I believe. हाँ, that is one part. खुद समझने के लिए तो पहले you have to be a devotee, you have to be non-envious, you have to surrender. But पढ़ाने के लिए teacher of Bhagavad Gita, what is the qualification? दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट टीचर कुछ कुछ ही हैं, करेक्ट? कौन टीचर बन सकता है? Prabhu who repeats the words of his guru and does not add anything from him. Yes, so you जो you लिखा have है वही said the first part. Repeat the words. Who can repeat the words? Who can repeat the words? who is surrendered to his guru and who is submissive. अगर उसका गुरु ही गलत बोल रहा है तो? Suppose I am learning from someone, he himself is teaching the wrong teaching of Bhagavad Gita, and if I repeat, is it of any use? No, Prabhu. Probably disciplic succession में जो भी आ रहा है, the person can be. हाँ, हरि बोल. तो कृष्णा से किस वर्ष में भगवान इसके बारे में बोलते हैं? भगवद गीता के बहुत जरूरी वर्ष है, क्योंकि बहुत लोग दुनिया में क्लेम करते हैं हम भगवद गीता पढ़ा देंगे, हम भगवद गीता हमको पता है, हमने भी तो पढ़ा है, मेरे घर पे भी भगवद गीता है, इसका मतलब मुझे नहीं आता है क्या? नहीं. इवम परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु. कृष्णा खुद बोलते हैं कि मैंने ये ज्ञान किसको दिया था? याद है, विवस्वान को दिया था, फिर उन्होंने इसको दिया था, चेन टूट गया, इसीलिए मैं फिर से आया. तो भगवान बताते हैं कि नॉलेज चेन में आता है, डिसाइप्लिक सक्सेशन के, जिसे हम गुरु परंपरा भी बोलते हैं. इज क्लियर? तो द चेन हैज टू बी देयर. नोबडी कैन से कि अरे मेरे पास तो अंदर से, दिल से, कहीं से ज्ञान आ गया. नहीं. चैतन्य महाप्रभु जो खुद भगवान है, उनके भी गुरु थे. ही लर्न एवरीथिंग फ्रॉम हिज गुरु. भगवान को क्या जरूरत है? बिकॉज भगवान दिखा रहे हैं नॉलेज मीन्स वन शुड गेट इट फ्रॉम द गुरु. नाउ इस तरह के कितने परंपरा हैं? हाउ मेनी सच बोनाफाइड परंपराज आर देयर? 4 Prabhu ji, 4. व्हाट आर द 4? One is coming down from Brahma, यस, Shiva, ब्रह्म संप्रदाय. yeah, और and Shaiva Sampradaya, कौन सा? Shankar, Bhagwan Shankar का, रुद्र संप्रदाय. yeah, Rudra Sampradaya, and then Lakshmi Sampradaya, श्री संप्रदाय. Shri Sampradaya, yeah, and the one this Gaudiya Sampradaya, Madhva नो Gaudiya नो नो नो, गौड़े संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के अंडर में. Sampradaya. Yes, yes, yes. इट इज कुमार संप्रदाय. जो चतुष कुमार है ना, 4 छोटे छोटे, सनत कुमार, सनातन, सनत, सनातन, सनंदन, तो कुमार संप्रदाय बोलते हैं. चतुष कुमार हैं, उनके संप्रदाय हैं. तो ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय. ओके. तो इनके प्रमुख आचार्य कौन है, आप जानते हैं क्या? Who is the prominent acharya of this? Obviously, they are starting from Brahma. Krishna gave knowledge to these 4 personalities in the beginning: Brahma ji, Shiv ji, Lakshmi ji और चतुष कुमार को. बट इनके जो संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य कौन है?
मध्वाचार्य है। आप लोग को ये सब बताया गया है कि नहीं बताया गया? नहीं बताया गया। No, I think yes, Prabhuji has told. Prabhuji has Okay. But even if he has not told or told, I will repeat, you can note. So Brahma Sampradaya, the main acharya is Madhvacharya, जिसको आप उडुपी बोल के एक जगह है, वहां पे आप देख सकते हैं कि मध्वाचार्य के फॉलोअर्स है। उडुपी कृष्ण है ना, उडुपी कृष्ण जो मध्वाचार्य है। तो हम हमारा जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय, इसलिए हमारे संप्रदाय को बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म मध्व संप्रदाय में लिया था, तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इसलिए वी आर कॉल्ड गौड़ीय वैष्णव। सो ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव है हम लोग। सिमिलरली देयर इज श्री संप्रदाय, एंड श्री संप्रदाय के सबसे प्रमुख आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। अगर आप श्रीरंगम में आएंगे या तिरुपति में आएंगे, दिस साइड ऑल द वैष्णवस आर श्री वैष्णवस, जो रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट इज ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। Shankaracharya. रुद्र, हाँ, तो रुद्र संप्रदाय नहीं, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य जो हैं वो ये गुजरात के साइड में उस तरफ काफी लोग रहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज कुमार संप्रदाय, जो कि विष्णु स्वामी है, उनके प्रमुख आचार्य। तो प्रभु ये जी, चार, हाँ, यस। अ, रुद्र संप्रदाय श्री निम्बार्का है या विष्णु स्वामी है प्रभु जी? आई थिंक मैं क्या बोला, मैं भूल गया मैं खुद ही। आई थिंक निम्बार्काचार्य इज फ्रॉम, वन सेकेंड, आई चेक, आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज, वन सेकेंड, आई चेक। ओके, ही इज, सॉरी, तो निम्बार्काचार्य इज फॉर, आई थिंक दिस कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, सॉरी आई चेंज। तो निम्बार्काचार्य जो हैं वो कुमार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, और विष्णु स्वामी जो हैं वो रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। ओके, चलो, सो लेट अस सी द नेक्स्ट। तो ये चार जो संप्रदाय हैं, ये चार यूनिवर्सिटीज की तरह है। जैसे बोनाफाइड यूनिवर्सिटी होती है, तो इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी से जाके आप सही से नॉलेज ले सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटी फॉलो कर रहे हैं, भर्ती तो ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, है कि नहीं? कोई बोल सकता है कि हाँ मैं ब्रह्म संप्रदाय का हूं, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है टीचिंग, तो फिर हमको, इसीलिए जो हर संप्रदाय के प्रमुख कुछ शिक्षाएं होती हैं, इसीलिए आप देखेंगे हमारे स्क्रिप्चर्स में तीन चीजों का प्रमुख बताया गया है, तीन चीजों का बैलेंस। क्या बताया गया है? गुरु, साधु और शास्त्र। अगर आप किसी एक पे रिलाई करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस है। केवल कोई गुरु पे रिलाई करेगा, समझ आ रहा है, उसके बाद शास्त्र है नहीं, तो गुरु सही बोलता है कि गलत बोलता है कैसे पता चलेगा? कोई शास्त्र पे रिलाई करेगा, प्रॉब्लम क्या है? केवल शास्त्र पे रिलाई करने का क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? कि प्रभु जी किताब तो है ना, भगवान ने दे दिया ना, भगवत गीता तो है ना, खुद और क्या समझने का इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस नहीं है प्रभु जी, खुद हम समझ सकें सब कुछ। समझ भी जाएंगे, लेकिन जो समझा है वो सही समझा है कि गलत समझा है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सपोज पूरा जीवन आपने कुछ कुछ सब, देखो भगवत गीता में भगवान ने अष्टांग योग भी बताया है, कर्म योग बताया है, ज्ञान योग बताया है, भक्ति योग बताया है। अब आपको जो समझ आ रहा है वो सही समझ आ रहा है कि गलत समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए गुरु भी जरूरत है, और साधु भी जरूरत, शास्त्र भी जरूरत। अच्छा, साधु क्यों जरूरत है? वैष्णव लोग, बाकी साधुओं की क्या जरूरत है? गुरु और शास्त्र है तो साधुओं मोटिवेशन, की क्या जरूरत? मोटिवेशन के लिए। एग्जाम्पल किसका देखेंगे आप? समझ आ रहा है? किसके साथ फॉलो करेंगे? प्रभु जी मैं चैंटिंग करता हूँ सुबह, कैसे माला करना है? एवरीबडी नीड्स कंपनी ना, जिसके साथ देखो अच्छा ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, कुछ डाउट है, पूछा किया। तो इसीलिए साधु जन भी हमको बहुत बहुत जरूरत है, एंड इसीलिए भगवान खुद कहते हैं कि ये तीनों के साथ हमको आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शो। कहाँ गया? यस,
दिख रहा है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर सवाल। हाउ टू हाउ टू अप्रोच अ राइट टीचर ऑफ भगवत गीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका फ्रॉम भगवत गीता। अगर आपको सही टीचर मिल गया, भगवत गीता का गुरु मिल गया, उसको अप्रोच करने का तरीका क्या है? प्रभु जी, प्रश्न करके, और प्रश्न भी करना है तो हमें मतलब इसलिए नहीं कि कुछ नीचे दिखाने के लिए। प्रश्न करना है हमें जानने के लिए। आई नीड टू अंडरस्टैंड। और 3 चीज करना है। प्रश्न जो है वो बीच का पार्ट है, सेकेंड पार्ट है। व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट while approaching the guru? प्रभु जी, हम्बल सबमिशन होके, हम्बल होके। Okay, she is telling first is humble submission. Okay, next. एंड सेवा भाव होना चाहिए। Okay, second is inquiry. Tad viddhi pranipatena. First is pranipat. You have to bow down कि I want to learn from you. हमारे में तो फिजिक्स का टीचर होता, हम पढ़ाते हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम, जैसे अगर आप ऐसे हाथ में ऐसे थोड़ा सा पानी ले लेंगे, वो फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। जैसे हाथ को ऐसे करेंगे, फ्लो करेगा क्या? वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट। सो वाटर फ्लोज ड्यू टू हाइट डिफरेंस, हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है कि नहीं? अगर दो लोग को बुखार है तो एक आदमी दूसरे को छू के बोल सकता है तेरे को बुखार है? बोलते तो नॉर्मल है ना, क्योंकि उसको खुद को बुखार है ना। सो अगर आपको गर्म चीज को पता करना है तो आप खुद अगर गर्म है तो आप गर्म पता कर सकते हैं क्या? आपका खुद हाथ ठंडा है, आप दूसरे को हाथ टच करके बोल सकते हैं क्या तेरा हाथ भी ठंडा है? बिकॉज हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, वाटर फ्लोज ड्यू टू हाइट डिफरेंस, करंट फ्लोज ड्यू टू, आप लोगों में से किसी ने फिजिक्स पढ़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज देखा है आपने? 220 वोल्ट, 0 वोल्ट ग्राउंड करते हैं तो करंट फ्लो करता है हाई वोल्ट टू लो। सिमिलरली नॉलेज फ्लोज ड्यू टू, कौन बताएगा क्या डिफरेंस? रेस्पेक्ट डिफरेंस। इफ यू डोंट हैव द डिफरेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर, नॉलेज विल नॉट फ्लो। इसीलिए देखा, हम बोलते हैं व्यास आसन। व्हाट इज व्यास आसन? गुरु को ऊपर लेवल में बैठाते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु ऊपर बैठेंगे तभी समझ आएगा, वो तो किधर भी बैठेंगे समझ आएगा, बट जस्ट टू हैव अ फीलिंग दैट ही इज सुपीरियर टू मी एंड आई एम स्मॉल पर्सन, तो दैट रेस्पेक्ट का डिफरेंस के वजह से नॉलेज फ्लो करता है। जिस तरह समान लेवल पे पानी फ्लो नहीं करता है समतल में, डिफरेंस में फ्लो करता है, नॉलेज को फ्लो करने के लिए भी क्या चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। अब डिफरेंस दो तरीके से आ सकता है, बताइए कैसे आ सकता है? देखो, ये ऐसे बराबर है, ठीक है। अब मेरे को डिफरेंस प्रोड्यूस करना है तो दो तरीका है, या तो इसको ऊपर कर दो या फिर इसको नीचे कर दो, या तो दोनों कर दो। सो शिष्य को क्या सोचना चाहिए? मैं छोटा हूं। और शिष्य को गुरु के बारे में क्या सोचना चाहिए? वो बड़े हैं। तो ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, डिफरेंस हो गया कि नहीं? तो ये हम्बल सबमिशन का मतलब ये है, प्रणिपात का मतलब दैट दिस इज अ नॉलेजेबल पर्सन, ही इज अ वैष्णव, ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, लेट मी बाउ डाउन टू हिम। तो मैं झुकता हूं तो मैं नीचे हो जाता हूं, और मैं गुरु को आदर सम्मान करता हूं तो गुरु ऊपर हो जाते हैं। और इस रेस्पेक्ट के डिफरेंस के वजह से क्या फ्लो करता है? नॉलेज। बट अपने आप नहीं होगा, खाली खाली दूर से प्रणाम करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा उसके बाद? अब क्वेश्चन पूछना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तब तो आंसर फ्लो करेगा ना, नॉलेज की तरह। अगर सेम लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नॉलेज तो मिल जाएगा लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट देयर हैज टू बी रेस्पेक्ट डिफरेंस बाय प्रणिपातेन और हम्बल सरेंडर, एंड देन परिप्रश्नेन यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन पूछने से हो जाएगा? नहीं। सेवया एट एंड लेस्ट, नेक्स्ट इज यू हैव टू सर्व द गुरु, यू हैव टू सर्व द इंस्ट्रक्शन ही इज गिविंग। जो वो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको फॉलो करना है, उसको बोलते हैं सेवया। तो जब ये 3 चीज करेंगे तो क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। बिकॉज उन्होंने तत्व को देखा है, अपने जीवन में समझा है, तो वो तत्व आपके जीवन में भी प्रकाशित होगा।
चलिए 3 चीज करेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फ्रॉम द भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 टेक्स्ट नंबर 34. ओके. तो humble submission, relevant inquiry, spiritual inquiry, and then one has to do service attitude. One has to serve. Okay. Next, 9th question I will show. One second. Where is the question? Okay, here it is. What is our real identity? How can you prove it? So, आपको अपने आइडेंटिटी के बारे में बताना है, हम लोग कौन हैं, एंड हाउ कैन वी प्रूव इट. यही हमारा आइडेंटिटी. This is the most basic question of Bhagavad Gita. Most basic. We are a soul, and We are soul. and the various incidents in the world wherein people have reincarnated, these are proof that soul is Okay. real. Wait, we will go one by one. Let us talk about identity. What is our identity first? I am a soul. Where in the Bhagavad Gita Krishna is telling this? Which verse? I don't remember the verse. Anyone remember the verse or some word? Okay, this word Krishna tells. प्रभु जी, देहिनो अस्मिन् यथा देहे. Yes, Hari bol. At least I am telling you this one verse of the Bhagavad Gita. All of you should remember. This is very, very, very important verse. Everybody should remember. So I will show this verse on the screen and we will repeat. Because without your identity, correct? कि आपका आइडेंटिटी क्या है, उसके बिना भगवत गीता से क्या करेंगे? समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से नाउ श्याम नारायण प्रभु जी हैं, ठीक है. मैंने श्याम नारायण प्रभु को ढेर सारा एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया. ओके, ठीक है. श्याम नारायण प्रभु जी को मैंने कॉलेज में एडमिशन करा दिया, कॉलेज का फीस पे कर दिया, और लाइब्रेरी का कार्ड इशू कर दिया, 50 तो बुक खरीद के दे दिया, और एगो यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन दे दिया, उनको यूनिफॉर्म खरीद के दे दिया, उनको बैग खरीद के दे दिया, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, सब कुछ खरीद के दे दिया. फिर श्याम नारायण प्रभु लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते मेरे से, प्रभु जी वैसे मेरा कोर्स क्या है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है कि एमबीए है? मैं बोला प्रभु जी इस सब समय बर्बाद मत करिए, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए. ये क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? पढ़ाई नहीं प्रभु जी, बस जानना. नहीं नहीं, ये कितनों को लगता है ये बहुत बड़ा बेवकूफी है कि प्रभु जी सब खरीद लिया, सब एडमिशन हो गया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब सोच रहे प्रभु जी मैं इंजीनियर हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ कि मैं एमबीए का पढ़ाई कर रहा हूँ. करेक्ट. तो अगर कोई पूरी भगवत गीता पढ़ लेता है और उसके बाद उसको ये नहीं पता है कि वो शरीर है कि आत्मा है, तो फिर क्या फायदा है कि नहीं. सो इस वर्ष से भगवान हमारे आइडेंटिटी के बारे में बोल रहे हैं. आइडेंटिटी के बाद ही ड्यूटी आता है. करेक्ट. अगर मैं श्याम नारायण प्रभु को पूछूं प्रभु जी आज से आपका ड्यूटी क्या है बताइए, तो पहला प्रश्न क्या होगा, प्रभु जी मैं हूं कौन, तो बताऊंगा मेरी ड्यूटी क्या है. मैं पिताजी हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, पहले वो तो बताइए. सबको समझ आ रहा है आइडेंटिटी क्यों जरूरत है? आइडेंटिटी के बिना ड्यूटी का कोई मतलब नहीं है. सबको समझ आया ये? यस और नो? इस दुनिया में लोग ड्यूटी के बारे में बहुत बात करते, प्रभु जी आपका कर्तव्य ये है, तुम्हारा कर्तव्य. अरे मैं हूं कौन पहले वो तो समझने दो, फिर तो कर्तव्य के बारे में बात करेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? प्लीज से यस और नो. से यस और नो. यस प्रभु जी, यस प्रभु. Yes. वेरी गुड. सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे. Someone can repeat. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे. कौमारं यौवनं जरा. कौमारं यौवनं जरा. तथा देहांतर प्राप्तिर. तथा देहांतर प्राप्तिर्. धीरस्तत्र न मुह्यति. धीरस्तत्र न मुह्यति. देही, देह मतलब शरीर, देही मतलब जो शरीर को धारण करता है, अस्मिन मतलब मैं,
तो मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, देह हूं? नहीं, मैं देही हूं, जिसने शरीर को धारण किया है। आई एम द वन हु पोजेसेस दिस बॉडी, देहिनो अस्मिन यथा देहे। आई एम द वन हु पोजेसेस दिस बॉडी, and this body goes through what phases? Kaumaram, Yovanam, Jara. From childhood to youthhood to old age. Tatha, and what will happen after old age? Tatha, देह अंतर प्राप्ति, जैसे ही ये देह का अंत होगा, देह अंत प्राप्ति, और एक शरीर मेरे को मिलेगा। धीरस तत्र न मुह्यति, तो जो धीर व्यक्ति है, जो सोबर व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ही विल नॉट बी बिविल्डर्ड, अरे क्या हो गया, कोई मर गया, उसका शरीर जैसे शरीर का बदलता है, शरीर बचपन से, जवानी से बुढ़ापे में, उसी तरह मरने के बाद दूसरा शरीर मिल जाता है। समझ आ रहा है आप लोग को? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फ्रॉम द भगवद गीता. I personally like this verse very much. Our founder Acharya Srila Prabhupada also again and again used to quote this verse. Tatha dehantara prapti. This is the foundation of the knowledge of Bhagavad Gita. Very good. Okay, so how to prove it? Now, somebody was telling how to prove we are souls. How to There prove? there have been a number of cases in the world wherein children have talked about and have been to the exact places where they were born in the previous lives. Yeah, people remembering their past lives is a proof of reincarnation. Now, how can body reincarnate? Body को तो generally क्या करते हैं? We put under the ground or we burn it. That means body cannot transfer. So what has transferred is something else, and that is the soul, which is non-material spirit. Okay, very good. What else? Past life experiences and memories. Other than that, Near-death experiences. near-death experience. People have just about to die and they have seen themselves. People have seen their own body. It's out of body experience, OBE. Then there is near-death experience. Okay. Then, other than that, any other proof of existence of soul? We say that, Prabhuji, my body is not keeping well. So, Yes. like, I am not me. So something, Yes. yeah. This is my hand. This is not I hand. This is not Shantanu. My head, my specs, my clothes, my stomach. मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट अरे मेरा कौन बोल रहा है? Who is this मेरा? That means मेरा is someone else. So that is self analysis. Sometimes we say ना, और एक क्या है, जनरली देखा है, my grandfather passed away. अरे where he passed away? He is lying there only ना. Where he went? He is there only. So who has passed away is the spirit soul. Okay, very good, very nice. Others can also participate and give their answers if they want. Okay, next. What are 3 symptoms of living person? एक जीवित व्यक्ति के 3 symptoms क्या हैं? Thinking, willing, and feeling. Thinking, Willing, willing, yeah, and feeling. 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 Thinking, feeling, and willing are the 3 symptoms. These are the symptoms of a consciousness also, we can say. कोई conscious है means he will have these 3 things. He can think, he can feel, and he can will. Will means इच्छा. I want to do this, I don't want to do this. That is not possible in matter. Is it clear? But we have limited thinking, feeling, willing. थोड़ा limited we can think, some little bit we have feeling, and limited will. Will means I want something, my desire. So limited. But Krishna is super soul. He has unlimited thinking power, unlimited feelings, and unlimited willing power. Whatever he wants can be done. So that is why he is called as supreme consciousness. Okay. Okay, next. What are the 2 types of bodies covering us? Explain the functionality with the example. Example, I think Shinta Prabhu would have given. Very easy example he gives. 2 types of bodies that are covering us.
Anyone who has not spoken can be given chance. Anyone who has not spoken yet? Guruji, gross Yes. body and subtle body. Yeah, gross body and subtle body. Gross body consists of Earth, water, fire, ether, air. okay. Yes. Bhumi apo nalo vayu kham manor buddhi revacha. Okay, what is subtle body consist of? Man, buddhi, ahankar. Yes. Mind, intelligence, and false ego. Gross body, subtle body. Can you give example? Real life example of how we can think? Is like we wear shirt and on the top of shirt we wear coat. So coat can be considered as gross body, and the shirt can be considered as a subtle body, and अंदर में हम वो हमारा soul. This is good. Gross body we can touch, right? Yes. Can you touch your mind, intelligence? No. Can't touch. But shirt you can touch. Coat also you can touch. So another example Shinta Prabhu gives. Very, very famous example. Computer of hardware, software. Hardware, software. Hari bol. So hardware is gross body. Printer, mouse, keyboard. Software is subtle body. जिसमें इच्छाएं होती है. मन में क्या होता है? Mind is a storehouse of emotions and desires. Intelligence helps us fulfill those desires, and ego is our identity, false identity. And after that, what is hardware, software? Computer अपने आप चलेगा क्या? उसके लिए कौन चाहिए? User चाहिए. So user is like the soul. Is it clear? Hardware destroy हो जाता है, software destroy नहीं होता है actually. Okay. Now, even most of the processes of this world, if you see, people say ना healthy रहना है, eat healthy, live healthy. So they are focusing on the health of gross body only. Subtle body के health के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है. And nowadays you see the health of the subtle body so much focused. I hear some people from US, from Europe, they spend lakhs of dollars to come to Rishikesh, to come to some yoga healing centers. Lakhs of rupees they are sending because they are understanding कि केवल अच्छा खाने से और सोने से कुछ नहीं होगा. Gross body will be nice, but mind, intelligence, they need spiritual treatments, okay, for them to be healthy. Very good. Next. So the verse for this is Bhagavad Gita chapter 7, text number 4. Bhumo rapo nalo vayu kham manor buddhi revacha. So ahankar, this is bhinna prakriti ashtada, where Krishna tells these are my energies. Chapter number 7, text number 4. Now, next question is, yeah, do we really die? What happens at the time of death? Give an example. मृत्यु के समय क्या होता है? What is the process? प्रभु, हम स्पिरिट, हम सोल कभी मरता नहीं है. वी जस्ट चेंज द बॉडी फ्रॉम, जस्ट लाइक जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं वैसे कपड़े चेंज करते हैं. एंड मृत्यु के समय लास्ट टाइम पे हम जो डिजायर रखते हैं, लास्ट टाइम पे जो हम सोचते हैं, उसी के अकॉर्डिंग और जैसे कर्म हमने किया है हमारे इस लाइफ में, जैसे हमने कर्म किया है, जो भी काम किया है, एंड जो हम डेथ बेड में सोचते हैं या फिर जो हमारे सामने आता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें हमारा नेक्स्ट बॉडी या फिर मटेरियल लाइफ जो भी है वो हमें मिलता है. Yes. So, we don't die. What dies is the body. And amazingly, Prabhupada जी बोलते हैं body is already dead. Body क्या die होगा? वो तो dead ही है ना. It's a dead matter.
When there is soul, वो बॉडी को चलाता है, जस्ट लाइक कार है. कार क्या लिविंग एंटिटी है क्या? नहीं. हम जाते हैं तो कार को चलाते हैं मैनुअली, करेक्ट. बट देन व्हाट इज दिस फूड, एयर, वाटर? इट्स लाइक फ्यूल. गाड़ी में फ्यूल डाल देंगे तो गाड़ी अपने आप चलने लगेगा क्या? नहीं चलेगा, ड्राइवर चाहिए. अगर कोई बोले मेरा गाड़ी मर गया, अरे गाड़ी तुम्हारा मरा ही हुआ था. समझ आ रहा है ना, गाड़ी कभी जिंदा नहीं था. तो बॉडी इज ऑलवेज डेड, सोल इज ऑलवेज अलाइव. So death का definition is when the soul is ready to leave the body is called as death. But in reality there is nothing death. Body is already always dead. Soul is there तो body थोड़ा move कर रहा है. Just like fuel थोड़ा डाल देते हैं तो कार आगे पीछे move करता है. That doesn't mean that the car is a living entity, correct? So the body is always there. So what is the meaning of death? If somebody asks you, what you will tell? When the soul leaves the body, dead matter is left by the living matter. Living does not die, dead is always dead. So when the living entity leaves the dead matter, it is called as death. But as of that, there is no death of matter, there is no death of living entity. So it's just a concept of separation. And another thing is, Krishna says, whoever is born will definitely die. The meaning of death is will separate from the body. And whoever has separated from the body will surely get a body again. And Krishna says, Vasamsi jirnani vihaya. Krishna says, na? Just like the clothes become old, we change the clothes. Similarly, when the body becomes old, we change the body. Now, what is the basis of changing body? What is the basis? प्रभु जी, अभी तो मैं टी शर्ट उतार के फेंक दिया. अभी नया टी शर्ट जो मिलेगा वो मेरे को वैन हुसैन का टी शर्ट मिलेगा, ना ली कूपर का टी शर्ट मिलेगा, ना पीटर इंग्लैंड का टी शर्ट मिलेगा. ये कैसे पता चलेगा? कोई भी मिल जाएगा क्या रैंडम अगला टी शर्ट? On the तो basis कैसे of the पता? karmas. Okay, so there are two principles, desire and deserve. So karma is like bank story. बैंक में कितना पैसा है? If you have lot of money, then you can purchase pantaloons shirt also. You can purchase Lee Cooper also. And if you don't have money, then सस्ता वाला से काम चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? You have to somehow manage with cheap roadside t-shirt. So it is based on the actions that we have done and also desire. Suppose सैम नारायणपुर के पास 2 करोड़ रुपए हैं, बट वो सस्ता टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं ना? जरूरी थोड़ी है कि किसी के पास पैसा है तो महंगा ही खरीदेगा. बट अगर उनके पास 10 रुपए है तो महंगा वाला खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते हैं. So there is two things. We have to desire also what you want. So desire is developed by our current activities. What we are doing, we are developing some types of desires in our life. And that is stored where? वो desire store कहाँ होता है? Storage unit कहाँ है? Subtle body में. समझ आ रहा है ना? इसलिए व्यक्ति मर जाता है, उसकी इच्छाएं नहीं मरती हैं, और वो इच्छा के हिसाब से उसको अगला शरीर मिलेगा. ओके. प्लस अगला शरीर मिलने के लिए और एक फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है कि कर्मा कितना है उसका. अच्छा कर्मा है क्या, तो फिर उसको अच्छा शरीर मिलेगा. खराब कर्म है तो खराब शरीर मिलेगा. अच्छा कर्म है लेकिन इच्छाएं खराब है तो खराब शरीर मिलेगा. करेक्ट. सो लाइक दैट, डिजायर एंड डिजर्व both are important. Very good. So this is very, very important. So I hope everybody understood about death. Achha, there is one more question. What is the definition of old age? Not there in the questionnaire. I am asking. Now all of you understood what is death. So according to the understanding of death, who will tell me what is the definition of old age? कौन बूढ़ा है? मैं बूढ़ा हूं कि जो दिख रहा है बूढ़ा है वो बूढ़ा है? कौन बूढ़ा है? शरीर शरीर बूढ़ा हो रहा है. नहीं नहीं नहीं. So, who is near to Definition death? of old age. Who is near to death? Yes. One's proximity to death is called as old age. आपको देखा कभी कभी कुछ बच्चे 5-6 साल के होते हैं, वो गुजर जाता है, उसको कैंसर हो जाता है. कोई कोई बूढ़ा लोग 80 साल का रहता है और 10 साल जीता है. So death means old age is what? How close you are to death. Can somebody tell I am not old?
Nobody knows. If you are supposed to die after 3 days, then you are the oldest person in the whole city. So we should not think, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी बूढ़ा हो जाएंगे ना तब भक्ति करें. अरे बूढ़ा तक पहुंचोगे क्या? So we should tell him what is the definition of old age. Our proximity to death is called as old age. जो जितना मरने के समीप है उसको उतना बूढ़ा कहा जाता है. और कोई गारंटी दे सकता है क्या? ना प्रभु जी 80 से पहले तो गुजरूंगा नहीं. अरे आजकल जो हालत हो गया है, कैंसर से गुजर जा रहे हैं, एक्सीडेंट से गुजर जा रहे हैं, धमाके में गुजर जा रहे हैं, यूक्रेन रसिया का वार में गुजर जा रहे हैं. क्या चीज से नहीं गुजर रहे हैं आप बताइए? कोविड से गुजर जा रहे हैं. पहले मरने के 2-4 कारण होते थे. आजकल तो ऐसे ही रास्ता क्रॉस करते करते कहां से गाड़ी उड़ा के निकल जाएगा पता भी नहीं चलता. देखे आप न्यूज में बीएमडब्ल्यू ने उधर जाके ठोक दिया, उसने उधर जाके ठोक दिया. मतलब आदमी भी कितना खुश होता होगा, इतनी बड़ी गाड़ी से मरा मैं, बीएमडब्ल्यू से एक्सीडेंट में मरा, छोटी मोटी गाड़ी से नहीं मरा मैं. समझ आ रहा है? बट मर तो गया. सो प्रॉक्सिमिटी टू डेथ इज कॉल्ड एज ओल्ड एज. ओके, yes, I think time is up. Okay, we'll just take one more question and then we will close. Okay, just we'll take one more question. Where is it? Okay, what are the proofs? Okay, various proofs of the existence of soul. I think we have already seen, na? Okay, what are the qualities of where is the question? What are the qualities of soul? Quickly. The same thinking, willing and feeling. No, that is qualities of consciousness. It is a symptom of soul. Soul का क्या characteristic है? Okay, Satchidanand. Sat, Chit and Anand. Sat means eternal. सत मतलब इटर्नल. शरीर की तरह नहीं है. शरीर क्या है? असत है. सिमिलरली चित मीन्स नॉलेज. शरीर क्या है? शरीर अज्ञान है. समझ आ रहा है ना? शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है. पेट में दर्द दे रहा है तो पता ही नहीं चलता है कि दर्द क्यों दे रहा है. समझ आ रहा है? समझ ही नहीं आता शरीर में हो क्या रहा है. तो इट्स हैविंग इग्नोरेंस. बट soul is chit, full of knowledge. And last is anand, that soul is blissful. And शरीर क्या है? निरानंद है. कितना सारा तकलीफ देता है. उंगली दर्द दे रहा है, ये दे रहा है, खांसी हो रहा है, गला दर्द दे रहा है. तो इतना शरीर दुख देता है. शरीर में कोई आनंद नहीं है. ओके, सो दिस वी कैन सी इन द भगवद गीता टेक्स्ट नंबर 2.23 to 2.25 में इसका डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल. Okay, so we have done up to 14, and I request all of you to go at least till 30. You can try till, because questions are easy, and 1 week time we have. You can read till question number 40. Okay, 15 we have done today because we are discussing, and अगर आप करके आएंगे तो और जल्दी होगा. Okay, and you will see that entire all the basic questions, you will be so knowledgeable that anybody who asks you quickly आप एकदम बता सकते हैं. Even if verses आपको याद नहीं है, so you can try to find the answers. And up to 40, please you do and come. I will put the PDF in the group. Everybody solve till 40 and come, and we will see and we will discuss faster because all of you will be prepared to come, and I want that all of you become good proponents. क्योंकि इतना समय जब आपने दिया है, already all of you have invested so much time, so why not become a good holder and a good the proponent of Bhagavad Gita by knowing, and people will also respect you कि हाँ सच में आता है भगवद गीता ना, हवाबाजी नहीं कर रहा है. And when you speak, people will understand that Bhagavad Gita is a solid scientific philosophy. It is not sentiment. Okay, so please, I will put the PDF in the group. If you can solve more, very nice. Up to 108 questions are there, but we will at least try to do till 40-50. Okay, and whatever you are not able to do, anyway we will discuss. If you can find the verse also in Bhagavad Gita, it will be very nice कि कहाँ पे भगवान ने ये चीज बोला. Okay, thank you very much.
आज का रिकॉर्डिंग भी अगर आप शेयर कर लेंगे तो हमको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे. आई मीन वी कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग अगेन टू बी वेरी Okay. क्लियर. Yes, 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 sure. We will share the recording. Okay. Thank you very much. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Srila Prabhupada ji ki jai.